Good evening, everyone. Welcome to the webinar where we are going to discuss the market cues, the global cues, what are local formations on Nifty chart, where are we heading in the short and medium term. We will also discuss important sectors going forward, and we are also going to discuss some important stocks for educational purpose, which we feel can take off from here, which we feel are on the verge of breakout, and which can be positional picks going forward. So first of all, thank you for so many messages, and it is really difficult to accommodate everyone. We have so much audience from different part of the world and living in different time zones. So, as you all had requested, what we are going to do going forward is that we'll record the videos and then we will share it on our YouTube channel and we'll share the links in our various groups. These videos will be grateful if you can share with your friends further and help us in getting or becoming more popular. There is not much need of giving personal description. This is for those who don't know me or new to this group. I have experience of working 10 years in India, then 15 years I worked abroad. Uh, I worked as a regional head of a European company, and I was taking care in my last assignment. I was taking care of the region from Southeast Asia to North Africa, all the countries in between. But stock market has been one of my fortes, one of my passions, and a place which has given me a lot of things, including great lessons. So I try and give these lessons out and try and teach people the ways in which they can enrich their wealth. Let us first begin with a news that a lot of people, a lot of us have been knowing regarding the global outlook. This is a recent article in Reuters where Morgan Stanley has said that there are chances that US may just skirt or just barely miss recession, touch and go. It's touch and go for US, but Europe is definitely going to fall in recession. If not, it has already fallen in recession. So, what repercussions this thing will have on our market? What repercussions our stock market will face because of this? We are going to discuss further. एक बात तय है कि यूरोप में रिसेशन आने वाला है या आ गया भी हो सकता है एज पर मॉर्गन स्टैनली, और यूएस में टच एंड गो है, शायद हो सकता है कि रिसेशन ऑलरेडी आ गया है या हो सकता है आएगा, या ऐसा कह रहे हैं कि आने के कगार पे है। नाउ मेयर्स जो एक लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कंपनी है, उनका भी यही मानना है कि यूरोप इज क्लोज टू रिसेशन एंड यूएस नॉट फार बिहाइंड। उनका कहना है कि भाई जो इनके शिपिंग के लोड होते हैं उसके बेस पे जो फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड जो इनके असाइनमेंट्स हैं और जिस तरह का बुकिंग हो रहा है और जिस तरह से इनके पास फ्यूचर में कार्गोज और उसका बुकिंग वगैरह है, तो इनका मानना ये है कि रिसेशन बहुत दूर नहीं है। यूरोप में तो यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में है और यूएस भी रिसेशन के कगार पे है। बट स्ट्रेन थिंग इज हैपनिंग in India or about India. As you all know, World Bank recently upgraded India's GDP. No, it is a very rare thing. ऐसा शायद ही कभी होता है। हम ज्यादातर सुनते हैं, more or less we hear that GDP growth forecast of this company or this country has been reduced, has been reduced, has been reduced.
यही न्यूज होता है। बट इधर कुछ अपेक्षा के विपरीत वी हैव सीन दैट वर्ल्ड बैंक ने भारत का जीडीपी अपवर्ड्स रिवाइज किया है। तो एक चीज ये है कि दुनिया में रिसेशन के कगार पे है, लेकिन इंडिया का जीडीपी बहुत हाई है और ऊपर जा रहा है, जो कि हमारे लिए, सब इन्वेस्टरों के लिए एक खुशी की बात हो सकती है। बट इसमें हमको ये देखना है कि कुछ सेक्टर्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा, कौन से सेक्टर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिससे हमारे वेल्थ एनरिचमेंट हो। इस पे थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन पिकिंग द राइट स्टॉक्स। एक क्वेश्चन जो कई बार मुझे पूछा गया है, और लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग इन पीएम्स इन आवर ग्रुप, कि भाई आईटी सेक्टर का क्या हो गया, क्या आईटी सेक्टर मुश्किल में है? तो यहाँ पे एक मिक्स्ड आंसर आ रहा है। जेपी मॉर्गन, इधर देखिए, मैंने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है जिसका लिंक मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा, मनी कंट्रोल पे आया है, जिसके कुछ स्नैपशॉट्स जो हाइलाइट्स हैं दैट आई हैव पोस्टेड ऑन दिस पेज। कि जेपी मॉर्गन इज सेइंग दैट margins of IT companies will continue to take a hit in the medium term. Long term is okay, but in medium term थोड़ा margins पे pressure आएगा. It has become a more bearish sector. Crisil said that resumption of travel and rising cost of hiring at times of high attrition will moderate operating margins. तो फिर से operating margin पे थोड़ा pressure आएगा, ऐसे कह रहे हैं. Pre-pandemic level पे वो आ जाएगा. Significant cost savings had driven margins to a peak of 26% in fiscal in 2021, which can moderate to around 24% लास्ट फिजिकल। तो थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे आएगा आईटी पे, इस तरह से इनका मानना है। नाउ हाउ डज पॉवेल स्पीच इफेक्ट आईटी? तो आउटलुक इन यूरोप एंड यूएस एज जो हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे रिसेशन की वजह से थोड़ा स्पेंडिंग पे इफेक्ट होने वाला है। और हमारी आईटी फर्म से इसका 86% रेवेन्यू जो है इन FY22, अगर आप देखें तो FY22 में अगर हम देखें तो यूएस एंड यूरोप वेर 86% contributors to the revenue of our IT companies। तो यहाँ पे स्पेंडिंग अगर कम होगा तो हमारी जो आईटी कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू, उनके स्पेंडिंग पे भी इफेक्ट 100% आएगा ना। नोमुरा का कहना है कि भाई ये जो सेक्टर है उस पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। तो एक इंडिया का जो लीडिंग सेक्टर था, जिसने इंडिया को, जो इंडिया को बहुत आगे लेके गया था और जो इंडिया को आगे और लेके जाएगा, उसमें फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा कंसोलिडेशन होने के चांस है। थोड़ा सा उसमें मार्जिन्स में प्रेशर आएगा और थोड़ा सा प्राइसेस स्टैग्नेंट रह सकते हैं या नीचे की तरफ जा सकते हैं। लॉन्ग रन, ऑन अ लॉन्ग रन इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आने वाले कुछ 6 महीने या 1 साल के लिए हो सकता है ज्यादा हमको बहुत पॉजिटिव मूवमेंट आईटी सेक्टर में देखने न मिले, ऐसा इंटरनेशनल दिग्गजों का मानना है। अगर मेरी पर्सनल बात पूछे तो आप देख, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा पर्सनल मानना है कि लॉन्ग टर्म इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी अगर पोजीशन कम करते हैं आईटी में तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। You can invest in some other sectors like automobile, like auto ancillaries, like finance and banking. These are the sectors that can take Nifty forward in the coming 6 months or 1 year. The performance of IT stocks show that they have fallen out of favor. So in 2022, the Nifty IT has fallen 27%, while the sectoral gauge is down 22%. So 6 महीने में काफी डाउन है निफ्टी के स्टॉक, और भी एक लहर आ सकती है जो ये स्टॉक्स को नीचे की तरफ ले जाए, ऐसा मानना है।
Indian IT companies are great. Don't remove all your positions from there, क्योंकि जब बाद में बॉटम फॉर्म होने के बाद जब तेजी आएगी तो आईटी सेक्टर और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को कोई जुदा नहीं कर सकता। बट फॉर द टाइम बीइंग नई खरीदी इसमें हम थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए। और जो आपकी पोजीशंस हो, मैं नहीं बताऊंगा, अगर 100 टीसीएस आप लेके बैठे हो तो आप 80 कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं, और बाकी का पैसा थोड़ा कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। तो let us move further to analysis of charts. Let us move further to chart analysis, और हम देखते हैं जो सेक्टोरल सिचुएशन है वो क्या कह रही है और क्या हो रहा है हमारे निफ्टी वगैरह में। मैंने इधर से कुछ चार्ट बना के रखे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। आई होप यू गाइस कैन सी द चार्ट। तो जैसे मैंने कहा था कि हम ग्लोबल इंडाइसेस को भी देखेंगे और फिर हम इंडियन इंडाइसेस को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रेंड है जिसमें डाउ जोन्स चल रहा है। आप देखिए डाउ जोन्स। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन डाउ। ओके, तो एक ये जो त्रिकोण है या ये ट्रायंगल है उसमें फंसा हुआ है डाउ, एंड यू नो इट हिट एन अपर लेवल ऑफ, यू कैन से, plus 34,600 around, and then again it will be looking for consolidation। और हो सकता है 32,000 पे, या एक सपोर्ट ये 30,000, या फिर उसके बीच में 31,000 कहीं पे थोड़ा डाउ विल कंसोलिडेट, and then once it breaks this range it can go to 36,000 और 37,000। बट फॉर नाउ ये जो कैंडल बनी है इस पे वीकली पे, और ये जो कैंडल बनी है डेली पे, वो कह रही है कि अगर ये लेवल जो है वो टूटा 33,321 का, तो फिर डो और भी नीचे जा सकता है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी नाइस फॉर डाउ जोन्स। अगर ये 33,271 तोड़ेगा तो यहाँ पे 32,700 तक भी आ सकता है। अगर ये 32,500 भी तोड़ता है तो हम देखेंगे कि डॉ काफी नीचे यहाँ से जा सकता है। यहाँ से 10% या 8% का कंसोलिडेशन जोन में भी डाउ जोन्स जा सकता है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नास्डेक। नास्डेक मतलब टेक स्टॉक्स हैं ज्यादातर, और नास्डेक नीचे जाता है मतलब हमारे आईटी स्टॉक्स पे भी काफी असर होता है। सो नास्डेक एक नेगेटिव ट्रेंड में है। यहाँ पे उसने एक ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे उसको ये जो है 12,156 के 12,156 का जो लेवल है, रेजिस्टेंस है, दैट हैज स्टॉप्ड on Nasdaq, and now the main resistance for it will be the same level 12,156, and above it we have a 200 days 50 days EMA, which is 12,581। if Nasdaq goes below 11,510, जो कि बहुत नजदीक है, it is really near the 200 days EMA, अगर ये इसके नीचे जाता है तो then Nasdaq again will be in a deep trouble and it can fall another 10% very easily to 10,400 or 9,600 levels. So Dow also looks in trouble. We'll look at Nifty, and as you can see from this
chart that Nifty made a high. Nifty made a high of recently of 18873. One Nifty made a high of 18887.6 and 87.6. Let us make the chart as precise as possible. Okay. 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 एंड अभी जो ये कैंडल बनी है बहुत अच्छी कैंडल नहीं है। मैंने चार्ट बना के रखा था लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो हम इसको फिर से बना लेते हैं। मैंने जो चार्ट बनाया था वो आवरली कैंडल पे बनाया था। सो लुक व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, so after making a high of around 18887, okay, sometimes we don't save the chart and we exit, तो यूजुअली सेव हो जाता है बट इस बार थोड़ा सेव नहीं हुआ। ओके, सो आफ्टर मेकिंग द हाई निफ्टी इज ट्राइंग टू सर्च द बॉटम। तो अभी उसको यहाँ पे एक बॉटम मिली है 18410 के करीब। यस, 18410, that is where it found a bottom, and if it sustains above this level then again 18,580, and then this negative trend line, if it breaks, it can go again upwards and it can go towards 18,900 or 19,000 if this bottom is sustained. अगर ये जो बॉटम बनाई थी अभी फ्राइडे को, इफ इट ब्रेक्स ऑन मंडे विच लुक्स एक्चुअली लाइकली, और अगर ये इधर यहाँ पे चांस है कि 200 आवर्स ईएमए है 18342 पे, अगर वहां से सपोर्ट ले लेता है और फिर से ऊपर की तरफ चलता है, स्टिल देन इट इज गुड। बट इफ 200 आवर्स ईएमए is broken 18341 पे, then the Nifty can come down to 18278, 18141 या 17908 levels. द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स जो मुझे निफ्टी के दिख रहे हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स जो मुझे दिख रहे हैं निफ्टी के, they are in all these three, that is 18278, 18141 or 17908. At present I don't see Nifty going below this level in this run, but देखो कुछ इतना ये निफ्टी ये चीज ही ऐसी है कि इसमें बहुत एक्यूरेटली कुछ भी कहना मुश्किल है। बट अब मल्टीपल सपोर्ट्स हैं निफ्टी के पास 17,900 तक। 17,900 के नीचे थोड़ी मुश्किल हो सकती है निफ्टी के लिए, और फिर हम इसको एक फ्री फॉल देख सकते हैं। सो ट्रेंड रिवर्सल जो है वो मैं 17,900 के नीचे ही मानूंगा। तब तक मैं इसको एक कूल डाउन या एक कंसोलिडेशन ही मानूंगा। देखो, नया हाई निफ्टी ने बनाया, तो नया हाई बनाने के बाद वो एक बार बॉटम मेरी कहाँ है वो ढूंढने की ट्राई तो करेगी। सो दैट इज व्हाट हैपेंड ओवर हियर। तो थोड़ा जैसे ही उसको बॉटम मिलेगा तो फिर ये नेक्स्ट फेज ऑफ बुल रन चालू करेगी। जैसे इधर से वो यहाँ तक आई थी in the month of November, it had come up to 18,400 levels, then it came down searching for support, उसको 18,150 पे अच्छा सपोर्ट मिला था तो एक बुल रन की, फिर एक बार नीचे आएगी, थोड़ा सपोर्ट जहां मिलेगा वहां से एक बुल रन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से फेजेस में, ये देखो यहाँ पे बुल रन हुआ था, फिर वो नीचे यहाँ तक सपोर्ट उसने लिया, बराबर है। तो एवरी आफ्टर एवरी अप मूव
Nifty tries to find a bottom or Nifty tries to consolidate. तो जब कंसोलिडेशन में उसको बॉटम मिल जाती है तो फिर वो फिर से ऊपर की तरफ या फिर से बुल रन आगे बढ़ाती है. दिस इज हाउ निफ्टी वर्क्स. दिस इज हाउ indexes work. Not only Nifty but other indexes also work in this way. आईटी एक ये जो ट्रायंगल में थी, निफ्टी आईटी was in this triangle. Unfortunately, it has broken this triangle. It was continuously taking this support after making a bottom near 26,231. It was taking this trend line as a support and moving upwards. But अब देखिए जो फ्राइडे का मूव था उसमें this trend line has been broken. So now these two lines are, this line is definitely a resistance, but this line is the latest support for IT index. And if Nifty IT index moves upwards from here, then it is great, but it does not look like that. And we may see हो सकता है 5% to 10% correction again in IT. And I think 26,000 has been a triple bottom, 1, 2, 3. So I think again this zone of 28,200 and 26,000 is going to prove a very strong support for IT index. Bank Nifty is continuously moving up in this channel. As I had said that the next bull run is going to be led by NBFC and banking stocks. तो उसी के चलते हुए कंटिन्यूअस अपवर्ड्स बुल रन में बैंक निफ्टी चल रही है. और अभी तो आप देखिए कि ये जो चैनल है उसके मिडल पे ही अटकी हुई है. ये देखो मिड लाइन रेजिस्टेंस, देखो कितने टाइम से मिडल लाइन रेजिस्टेंस हैज स्टॉप्ड बैंक निफ्टी फ्रॉम गोइंग फर्दर. But once if it breaks 43897.5 level, then the आधी चैनल बाकी है अभी. बहुत अपसाइड बैंकिंग स्टॉक्स में बाकी है यहाँ पे. सो बैंक निफ्टी is the sector, banks and financials are the sectors which look very positive to me, and I personally have increased my position in these sectors, and I personally have recommended many of my clients to increase position in this sector. FMCG sector is also on the channel top. अब यहाँ से हो सकता है दो चीज, it can break the channel top and go further up, or it can come back in search of a support, take little bit of support somewhere and then go ahead. So FMCG sector, all the Britannias and Lodla dairies and the ITCs and Imami and Dabur and Godrejconsumer, Tata Consumer, these stocks, Colgate Palmolive, these stocks, fast moving consumer goods look very good. बट हो सकता है थोड़ा बहुत ये चैनल टॉप रेजिस्टेंस उसको यहाँ पे लगे, या तो यहाँ से नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ये चैनल तोड़ेगा, और या तो हो सकता है कि वो चैनल तोड़ के और ऊपर यहाँ से निकल जाए. ओके, so these are the possibilities of sorry ये क्या हो. Okay, so these are the possibilities of what can happen in FMCG sector. Sector is looking good. reality sector जो है अभी एक अपने बहुत important support पे, if it breaks this support then the sector can be in trouble, but it looks like it can take support either here or here or here and then start moving upward. So reality sector is looking good. PSU Bank sector is looking, it has broken all the resistances and is skyrocketing upwards. So
it is a sector which needs little bit of a cooling down और थोड़ा कमबैक होगा इसमें, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री लेनी चाहिए पीएसयू बैंक्स में, क्योंकि ये बहुत बहुत दूर है अपने सपोर्ट से। उसी तो ये 50 डेज ईएमए है और ये है 200 डेज ईएमए है, उससे काफी ऊपर निकल चुका है। तो एक बार थोड़ा करेक्शन देने के बाद ये जब नीचे आए सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाने लगे, तो दैट विल बी द राइट टाइम टू एंटर पीएसयू बैंक स्टॉक्स। अभी तो ये बहुत 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 ऊपर रॉकेट की तरह निकल चुका है, इस लाइन में, ये ट्राइजेक्टरी में पर जा रहा है। सो एक्सेलेंट सेक्टर, बट थोड़ा इसमें कूल डाउन होने दीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कहीं पे ले, फिर आप पीएसयू बैंक में थोड़ी एंट्री बढ़ा सकते हैं या ले सकते हैं। फार्मा सेक्टर थोड़ा कमजोर लग रहा है, ये चैनल तोड़ रही थी, नेगेटिव ट्रेंड तोड़ के ऊपर जाने लगा था, लेकिन फिर से अभी ये सपोर्ट की तलाश में नीचे आ गया है। सो टिल इट क्रॉसेस 13,000 लेवल्स या 13,300 लेवल्स, तब तक फार्मा सेक्टर विल नॉट बी दैट गुड। मिड कैप्स देखो, निफ्टी काफी हाई चली गई, निफ्टी मेड न्यू हाई, बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इतनी मूव नहीं आई है। इनफैक्ट ये नेगेटिव ही रहा है अगर आप देखें तो, इसका जो मूवमेंट है वो। तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स इसमें खरीदी आ सकती है इन द नेक्स्ट बुल रन। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद, थोड़ा कंसोलिडेशन तो काफी हुआ है, तो हो सकता है एक बार जब ये 33,000 का लेवल तोड़ के ऊपर जाएंगे ये स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत एक बार सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। सो मिड कैप देयर इज लॉट ऑफ रन स्टिल पेंडिंग। स्मॉल कैप्स भी आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड में से तो बाहर आ गया, बट अभी वो कंसोलिडेशन फेज में ही है। जो उसका हाई था, हाई बनाए थे उसने लास्ट बुल रन में, उसके आजू बाजू भी वो पहुंचा नहीं है अभी। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एज वी सेड, डिसाइसिव मूव्स आना अभी बाकी है। जो मूव्स आए वो मैक्सिमम ज्यादातर लार्ज कैप में ही आए, और लार्ज कैप के अंदर जो मूव थे उसके चलते हुए ही निफ्टी ने, ऑफ कोर्स निफ्टी में, निफ्टी 50 में तो लार्ज कैप स्टॉक्स ही होते हैं, तो लार्ज कैप स्टॉक्स ही चले हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप्स जिस तरह 2021 की जो तेजी की आंधी थी उसमें चले थे, वैसा अभी मूवमेंट आया नहीं है। करीब करीब ये मई या करीब करीब ये बोल सकते हैं कि फेब्रुआरी, ये साल में फेब्रुआरी के जो लेवल थे वही लेवल पे आज भी है। जो इसने, मिड कैप ने एक अच्छा बॉटम बनाने के बाद एक पीक बनाने की कोशिश की थी अप्रैल में, उससे उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट के साथ 7,000 के करीब नीचे आया था, वहां से थोड़ा ऊपर गया, बट अभी 2-3 महीने से इसमें कोई भी मूव आया नहीं है स्मॉल कैप में। सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप हम कह सकते हैं कि आर स्टिल इन कंसोलिडेशन फेज, बट देर इज अ चांस दैट इन नियर फ्यूचर, इन 1 or 2 months टाइम, इसमें एक अच्छा मूव देखने मिले। और अच्छा मतलब 20% का मूव स्मॉल कैप में, और करीब 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 10 से 15% का मूव मिड कैप में हमको दिख सकता है, बट इन नॉट राइट नाउ, इन द नेक्स्ट फेज ऑफ बुल रन। ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत अच्छी मूव्स बनाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है। आप देखिए ये अभी फिलहाल जो 50 डेज का ईएमए है उसके नीचे चला गया है, तो एक बार ये 200 डेज के ईएमए तक आ सकता है, एंड देन अगेन ऑटो कैन लुक good, but it is not looking as good currently as FMCG and bank nifty banking sector. One sector that looks good is
एमएनसी, निफ्टी एमएनसी विच इज गिविंग गुड मूव्स। ये देखिए यहाँ पे उसने जो फ्राइडे को गिरा था फिर भी एक सपोर्ट लेके काफी फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। तो निफ्टी एमएनसी इज अगेन लुकिंग गुड राइट नाउ। एनर्जी में फिर से थोड़े प्रॉब्लम दिख रहे हैं, और एनर्जी भी ऑटो की तरह, और उसने 200 डेज 50 डेज तोड़ दिया है। हो सकता है 200 डेज का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने लगे, तो इट विल बी अ गुड थिंग गोइंग फॉरवर्ड। जो पीएसई सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर, उसमें भी हम देख सकते हैं कि काफी दूर है अपने सपोर्ट से, तो एक बार ये नीचे आ सकता है और सपोर्ट टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो, बट ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर दिस सेक्टर, जिसने अभी अभी ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकआउट टेस्ट करके या यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। मेटल सेक्टर भी वही है, काफी दूर है अपने सपोर्ट से, तो एक बार नीचे आके सपोर्ट को टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। नाउ कमिंग टू सम 10 important stocks which we had promised that we will give. तो एक उसमें हाई रिस्क है, अभी भी काफी रिस्क बना हुआ है इसमें, बट थोड़े पॉजिटिव निशानी, थोड़ी पॉजिटिव बाइंग, थोड़े पॉजिटिव रिकमेंडेशन, थोड़े पॉजिटिव मूव्स यस बैंक में आना शुरू हो गए हैं। तो एक बार ये 21 के लेवल के ऊपर आ जाए, फिर इसको 23 या 27 के लेवल तक जा सकता है, मैक्सिमम 30 तक जा सकता है। उसके लिए इसको आफ्टर क्लोजिंग अबाउट 21 एंट्री ले सकते हैं, बट स्टिल please be cautious. Yes Bank still is a very high risk stock, and whatever I am saying, it is just for educational purpose and for paper trading. Please take positions in the stock after making after discussing with the concerned authorities and your financials, and do your own research before taking positions. बिरला कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो सीमेंट में है, नॉन एनर्जी मिनरल्स में है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में है, और इसमें एक यू फॉर्मेशन के चांस है। तो इसमें हम एंट्री ले सकते हैं वंस इट गिव्स अ क्लोजिंग अबाउ 1115। तो फिर ये स्टॉक जा सकता है 1053, 1087, 1120 और 1145 तक। इसमें स्टॉप लॉस आपको 895 का रखना होगा। ओके, जो यस बैंक है उसमें अगर आप 21 के बाद एंट्री करते हैं तो आप स्टॉप लॉस उसमें रखना एक 18 के का स्टॉप लॉस रखना। आवर नेक्स्ट स्टॉक इज वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, आप देखिए कि इसको परफेक्ट कप एंड हैंडल तो नहीं कहेंगे, बट अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू कप एंड हैंडल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये डब्ल्यू जैसा है, डब्ल्यू, तो मतलब परफेक्ट कप एंड हैंडल तो नहीं है, बट वेरी सिमिलर टू कप एंड हैंडल। तो एक बार जब ये 778 के लेवल पार कर दे वीआईपी इंडस्ट्रीज, तो इसमें एंट्री ली जा सकती है। इट कैन गो टिल 812 और 815। In a long run, it can also go to 943. The stop loss that you should maintain in this company is around 643. Our next stock is Suprajit. Suprajit is coming out of a long period of consolidation. It has given a breakout with a volume, but still I think you should wait for a closing about 365. And once the stock gives a closing about 365, it can go to 378, 398. In a long run, this stock can go up to 438. And you should keep a stop loss below 299 or 310. Marico Industries, FMCG, जैसे हमने कहा था, it is giving a breakout. The CMP is 523, but you should wait till it gives a closing above 532. Closing above 532 or 540 can take the stock to 554, 568,
580 and even as high as 600 plus. And the stop loss that you should keep in the stock is closing below 480. गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगेन आप देखिए ये जो ट्रायंगल है उस स्क्वीजिंग ट्रायंगल उसको तोड़ के ये निकल चुका है or you can take an entry after it gives a closing above 939. The targets will be as mentioned over here, 979, 1120, 1070 and 1137. The stop loss you can keep below 790 closing. Anjani Portland Cement is a good stock, a kind of W formation it has done. An entry can be taken, X by 2 actually entry can be taken about 265 and 294. The target will be 340 and 376. Stop loss you can keep at 209 or you can even keep it at closing above below 230. Glenmark Pharma is a company, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी. ये देखिए किस तरह से वो एक यू फॉर्म बना रहा है इधर, राइट. इट इज मेकिंग अ यू. आपको अच्छी तरह दिखे इसलिए लाइन फॉर्म में ले लेता हूं. ओके, so you can see over here how it is making a U kind of structure, or we expect if it closes above 448, then it can go to 495, 550 and 590. Long term, it can even go up to 670, 650. But you need to keep a stop loss at a closing below 410. Okay. Our next recommendation would be Bajaj Consumer. The stock has, the promoters have given a buyback also of 240. अभी stock is at 170. Not all stocks will be bought back. आप समझिए बात को. Not all stocks will be bought back. Be only a small 33 point something lakh stocks are being bought back at 240. So the stock is also forming a U, and you can we already recommended in our group at for a closing around 170. I think we recommended. And now if you already made an entry, that is fine. But if you have not made an entry, so 280, 186, above 186 you can make an entry. Target will be 207, 225. Long term targets are 270 and 323. Stop loss can be maintained at around 140, closing below 140. A final recommendation for the evening is a stock called Sundaram Fasteners. I think they have a monopoly of more than 45% in the fasteners market. And once the stock gives a closing about 942, the stock can go to 995 and 1020. If it gives a closing above 1020, then there can be a fresh breakout and it can take the stock to new highs. So it is a monopoly stock, portfolio stock, entry about 941. For now, the target is 1020, but it can go much higher than that. Stop loss can be kept at a closing below, you can say 877, but because it is a portfolio stock, can even keep a closing around 801. And if it by chance comes down and bounces from there, then in that case you can always average on the bounce, not while it is falling, but on the bounce. But this is a long-term investment idea. So I hope that we have given a very good perspective of the global market, what is going to happen in Nifty, and we have given some important stocks for paper trading. We hope that you like this video, and please make it a point to share this video with your friends and relatives and in your various groups to those who are interested in financial markets and stock markets. Wish you all a very good evening and see you soon. We will once again start doing our regular videos and regular
broadcast of uh, educational educational calls and educational videos related to stock markets. Okay, guys, have a nice day. Have a nice weekend. Bye.